I was the creative director there. Right. We got BBC National Award for Pink and Nirja and many awards for Sachin, Dhoni, Padmavati, Sultan, Begum Jan, Right. and Adil and Mushkil, Kamali, Rais, Deadpool, Baywatch. It's a long list. I got a chance to meet with the CMD of Prince Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, and he offered me something that जो मुझसे मना नहीं हो पाया. And then I joined as a CEO of Prince Hamdan Company, and I was there for 2.5 years. And then meanwhile, I got a chance to meet with SME president of SME Chambers of India, and Right. he offered me the vice chairman of GCC SME Chambers of India. There, people are talking about Hindu, Muslim, Sikh, Isai. As an Indian, we have to stand together and we have to, build this nation together. So, वो मेरी कोशिश है. The man behind the success of more than 150 Bollywood films, be it Neerja, be it Padmavat, be it Sachin, or be it MS Dhoni. The man who has worked with megastars like Amitabh Bachchan in the industry, welcoming Mr. Waseem in a conversation on the Wit Chat Show. Thank you. It's a pleasure to have you, Waseem ji. And firstly, I would want to know about your journey, and how successfully you've embarked and you have accomplished the number. And you've worked with almost like all the big films that have come into the industry in the past 7, 8 years. So firstly, I would want to know that how did it start? Like, please tell me, how did you start from the scratch? First of all, thank you, Wit Chat, for inviting me. And I'm blessed that working on day-to-day basis for some big project and big films, or you can say, but it's all started, the journey is very long. Right. It started in 2000 Right. from Delhi, and where I did media and broadcasting and this and that course. And then if I'll tell everything about my life, it will be very, very long, that how it is started and how it is done. It is done. I have done so many things so far, and Right. and I want you to ask me something about the future, so that it will be more interesting conversation. Right. Because there are so much of PR about myself that I have done. Of course, I was in every media, and every media is India's biggest PR and advertising company. And they have done so many films, and I was the creative director there. Right. We got BBC National Award for Pink and Nirja and many awards for Sachin, Dhoni, Padmavati, Sultan, Begum Jan, Right. and Adil and Mushkil, Kamali, Rais, Deadpool, Baywatch. It's a long list. So I resigned, and then I started my own company, Inking Ideas, and we are working with some corporate. Right. We have office here in Bombay and Dubai, and then I went to Dubai. I got a chance to meet with the CMD of Prince Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, and he offered me something that जो मुझसे मना नहीं हो पाया. And then I joined as a CEO of Prince Hamdan Company, and I was there for 2.5 years. And then meanwhile, I got a chance to meet with SME president of SME Chambers of India, and Right. he offered me the vice chairman of GCC SME Chambers of India. So I worked there, and then I resigned last year in November, I think, September, November, and then currently working on something else. Okay. So my next question to you would be, what is your take on Bollywood actors? Because you've come from a field of PR, and you've done so much of it in your life, and even now your current company, Thinking Ideas, is all about your Inking Ideas. Thinking Ideas. Yeah. Inking. Inking Ideas. Okay, Inking Ideas. Sorry for the name. So your company also deals with celebrities on that aspect. So what do you think that why is PR or having a PR or having a market strategist it's so consequential for the celebrities? जब PR की बात होती है, आज के वक्त में हम लोग कहते हैं यार PR बहुत ज़रूरी है, मगर अगर हम
भगवान के ज़माने से देखें, अगर हम पैगंबर के ज़माने से देखें या फिर खुदा के ज़माने में, खुदा ने भी PR करने के लिए अपने लोगों को भेजा, एक मज़हब को फैलाने के लिए। देवता आए, पैगंबर आए, और आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस थिंग, बट लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ज़रिया चाहिए आपको, है ना। आज के ज़माने में वो सोशल मीडिया है। ऑफ कोर्स पहले न्यूज़पेपर हुआ करता था, देन रेडियो हुआ करता था, देन उसके बाद टेलीविज़न हुआ जी, उसके बाद यूट्यूब आया, एंड देन ऑरकुट था, एंड नाउ आज के दौर में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सो PR इज़ लाइक उर्दू में कहते हैं शे रग, मतलब आपको ज़िंदा रखने वाली चीज़ जो है वो PR है। अगर आज की तारीख में लेट्स सपोज पेप्सी इज़ अ ब्रांड, और पेप्सी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग करे या PR करे, बिकॉज दे आर पेप्सी, but every year they are doing so much, they are investing so much on PR and advertisement, because PR is compulsory for each and every brand, for each and every personality. अगर आज अमिताभ बच्चन सर हैं, वो मीडिया से दूर हो जाएं, मार्केट से दूर हो जाएं, I bet you in 2-3 years people will stop talking about him. Absolutely. कभी जिक्र होगा तो बात ठीक है, अदरवाइज पीपल विल लाइक हाँ ठीक है। अभी बहुत सारे से सुपरस्टार हैं जो हमारे पास थे और वो हमारे पास से चले गए, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे उन्हें याद कर लेते हैं, बाकी मीडिया में उनका जिक्र नहीं चलता। सो PR इज़ वेरी important for each and everyone, and nowadays it is very easy to connect with the audience with PR. Right. Now coming back to your personal life, you've been a philanthropic, right? If I'm not wrong, you've been into philanthropy. You have conducted one of the biggest Tiranga Yatras of the country, with like more than 1.5 lakh people, being a part of it. So my question to you is like, what was the purpose, and what was your purpose, and was your purpose served after conducting such a big, massive event? आज के वक्त में देश को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देशभक्त पहले भी थे, देशभक्त आज भी हैं, बट मैं और लाइक माय गुरुदेव, लाइक विच इज़ ग्रैंड मास्टर शिवजी भारद्वाज, हम लोगों में अक्सर ये डिस्कस होता है, जो हमारी यूथ है वो देश के फ्लैग से दूर जा रही है। They don't have that much of engagement with national flag or 26 January or this thing. They are going to school, oh yeah, 26 January school jana hai, jhanda fehrana hai. That mindset we have to change, because like लोगों ने बलिदान दिया है, लोग मरे हैं इस झंडे के लिए, और आपको यकीन नहीं आएगा, लगभग 15 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने इस झंडे के लिए अपनी जान दी है। और ये इतिहास आज का नहीं है, ये इतिहास बहुत पुराना है। वो चीज़ें लोगों के सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो यंग जनरेशन है उनको बता पाऊँ कि यार एक दूसरे के साथ एज ए इंडियन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एज ए इंडियन वी हैव टू स्टैंड टुगेदर एंड वी हैव टू बिल्ड दिस नेशन टुगेदर। सो वो मेरी कोशिश रहती है, एंड वी प्लान दिस थिंग दिस ईयर in my hometown, and fortunately me and Shifuji Bhardwaj, my guru, we went there, and Sailab tha. If you go and see my Instagram, some around 1.5 lakh people were there, and एक हुजूम था, और बहुत सारी सी वेबसाइट ने लिखा that it was India's biggest Tiranga Yatra. And now we are planning for 26 January and then so on, and we will keep doing this thing. Right. Okay, so on a parting note, what do you think that, when we come to the end of the interview, I'd really want to ask you this, that, where do you see yourself as an individual? I think you're producing a film, you are doing lots and lots of things. I think you're into influencer marketing as well. So where do you see yourself in the coming 5 years? Coming 5 years, we have very, very big plans.
Of course, I'm directing and producing films, but it is only on, मैं थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का इंसान हूँ, देशभक्त टाइप का इंसान हूँ. वो कहने से कुछ नहीं होता, दिल की आवाज़ आती है तब होता है. कहते भी नहीं तो बहुत लोग कहते हैं, बट मेरा जो अभी आने वाले 4-5 साल का मोटिवेशन है जी. और जो मैंने प्लान कर रखा है, जो हमारी टाइमलाइन है, उसमें आप बहुत सारी सी बायोपिक देखेंगे जी. शहीद आज़म और हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर, और कुछ परम वीर चक्र विजेताओं के ऊपर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द देशभक्ति Right. for some time. And we have completed our film, which is again for the lead actress is Khushbu Khan, and I'm playing the lead. I'm directing also, and this is again the biopic of one of the Shahid Azam, and I will reveal the name very soon. It's in post production, and most probably in 1.5 months we are ready with it. So motivation and future plan is next 5 years, at least 6, 7, 8 films on Deshbhakti. So only Deshbhakti, you're not going to, okay. I have a couple of offers. I have, because थोड़ा सा एक्टिंग कर लेता हूँ, वो आपको पता लगेगा जब पिक्चर आएगी. डायरेक्ट भी कर लेता हूँ. तो आई हैव कपल ऑफ ऑफर्स, बट अभी तो देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं. और ये मतलब ये सब लोगों की नहीं है, सारे प्रोडक्शन हाउस की नहीं है कि देशभक्ति का कुछ है तो मुझसे ज़रूर मिले, और देशभक्ति के अलावा आने वाले 3-4 साल तक, 5 साल तक तो कुछ नहीं है. डेफिनेटली जी. सो यही जो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो प्रोडक्शन हाउसेस जो है, जो भी पेट्रियाटिक फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं, वो प्लीज़ वसीम आमरोही जी को. आई एम रेडी टू डायरेक्ट, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस, आई एम रेडी टू एक्ट, आई एम रेडी टू डू स्पॉट बॉय इन दैट. अगर देशभक्ति की किसी शहीद की स्टोरी बना रहे हैं, मुझसे कहेंगे वसीम आमरोही स्पॉट बॉय बनना है, आई विल बी देयर. आई विल बी हैंडलिंग द झाड़ू वर्क. झाड़ू देना मुझे, मैं झाड़ू लगाऊंगा सेट पे. बट देशभक्ति को भी हो तो मुझसे बात कर सकते हैं. ठीक है. Thank you so much, Wasim ji, for joining us in the conversation. Thank you very much. And lovely chatting with you. And please do like, share, and subscribe, and stay tuned for such amazing. And in the end, I want to tell you that you are a very smart chap, and I'm highly impressed, because at this age, you have very bright future. Thank My you. best wishes. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.